Story number one will have three parts to it. The story is that terrorist Vikas Dubey, and we have never been shy of calling him that because the UP police calls him that. Terrorist Vikas Dubey has finally been arrested, but the arrest has happened after, for 7 days, he crisscrossed the whole of North India and reached Ujjain, from Kanpur to Faridabad to Kota to Nimach, and then finally Ujjain. Now, beyond the templated political blame game, who is the real source behind Dubey's clout? That is going to be the big focus on this channel, on this debate. Preventing future Dubeys from abusing the system is going to be our focus right here. Also on the show, the voice that must be heard amid the political bickering. The one voice that needs to be heard is the voice of these people. Family members of the slain cops. They say that police informers and netas are behind the cops' murder. And they also say, catch the real culprits behind Dubey's rise. These are powerful words. Those interviews are going to come up at around 9:30. But first, let's quickly show you this presentation, which will give you a roundup of what exactly happened from this morning till the evening. Brazen and defiant, even in police custody. UP gangster Vikas Dubey, the main accused in the Kanpur bloodbath that killed 8 cops, finally held. Not in UP, where there was a red alert for him, but 637 kilometers away, outside this famous temple in Madhya Pradesh's Ujjain. This CCTV footage from outside the Mahakal temple showed Dubey in a mask being taken away by half a dozen cops. Even more surprising, in the last 6 days, Dubey reportedly went from Kanpur by road to Haryana's Faridabad, and then again from the NCR town to Rajasthan's Kota, and then onwards to MP's Ujjain, unchecked for over 1,500 kilometers. Leading to questions, was Dubey really arrested, or was all this an orchestrated surrender? Local accounts suggest that Dubey was first spotted at around 7 a.m. when he was trying to enter the temple from the Shankh gate. One version says he was buying prayer offerings to take inside the temple with the shopkeeper. When the shopkeeper recognized him and alerted security guards, when he emerged from the temple, the guards questioned him and he produced a fake ID card of a much younger man with the name of Paul. पहले तो हमने विकास दुबे का जो फोटो देख रखा था हम लोगों ने जी, तो हम लोगों को लगा यहाँ महाकाल के दर्शन करने आया। 2 घंटे तक पहले हमने इंक्वायरी किया, उसका हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी को बताया, हम लोगों ने पुलिस कस्टडी को बताया। All day long, opposition parties in UP and even a serving IPS officer raised questions over Dubey's arrest. In response, both the MP and the Uttar Pradesh government claimed the gangster was indeed arrested. मध्य प्रदेश पुलिस ने, उज्जैन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर इस दुर्दांत अपराधी को गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है। मैं मध्य प्रदेश पुलिस को इसके लिए बधाई देता हूं। विकास दुबे आज सुबह महाकाल मंदिर पर दर्शन करने आए थे। वो स्वयं की गाड़ी से आए थे। उनके साथ 2 साथी थे जो अपना नाम अभी बिट्टू और सुरेश बता रहे हैं। बाकी के लोगों के बुलाने के बाद पुष्टि हुई है कि ये विकास दुबे हैं, तो पुलिस की कस्टडी में उज्जैन में है। इसके गैंग के 5 अपराधी आज सुबह तक मार गिराए गए हैं और कई अन्य अपराधी जो हैं पुलिस की गोली से घायल हुए हैं। तो निश्चित रूप से ये अपनी जान बचाने के लिए जगह जगह भाग रहा था। Hours after Dubey's arrest, the father of UP Constable Jitendra, killed in last week's raid, said policemen who helped Dubey were bigger criminals. उससे पहले विकास दुबे से पहले तो मैं उन गद्दारों की मांग करता हूँ जिन्होंने ऐसा विश्वासघात अपने प्रशासन के साथ किया है, पीठ में छुरा भोंका है। At Kanpur's Bikru village, destruction all around at the home of criminal Dubey. Just 2 other things to be found: lots of police and silence across the village. A Uttar Pradesh police team is expected to take Dubey on transit remand from Ujjain and produce him in a court in Kanpur
likely by tomorrow. With Anurag Dwari and Sahib Alam, this is Alok Pandey, NDTV. Joining us right now is Rajya Sabha MP and senior leader of the Congress party, Mr. Digvijay Singh. Mr. Singh, thank you so much for speaking to NDTV. My first question to you is that I've heard a lot of comments, your tweets as well, and also lots of comments from the Congress party where you seem to be in doubt about this actually being an arrest. Why? Because of the whole scene, you know. Person who is wanted in such a heinous crime about 6 days back, he travels from UP to Faridabad in Haryana, then goes to Kota and goes as I don't know, this is what is mentioned in your report just now, and then appears in Ujjain. Now he walks into the temple. I don't know what the CCTV camera is doing, and does the darshan. And when he comes out of the darshan, there is a photograph of his walking alone after doing the darshan within the temple. And then the security guard of the private security agency, some Lakhan Singh Yadav, he catches hold of him and then calls the police. Now, Madhya Pradesh police was totally unaware of Mr. Vikas Dubey being in Ujjain or in Mahakal temple, and they came to know of this only after this security guard, I don't know from where he got this information, and he handed over Vikas Dubey to the Madhya Pradesh police. Now, a criminal of that kind, a gangster of that kind, would not do what this man has done, who used to be armed to the teeth, walked without any arms in broad daylight during the Shravan month, where there's a large number of devotees in the Mahakal temple. So obviously this is a staged surrender or a staged I would arrest. say a staged arrest. But so the Madhya Pradesh police, I don't think they can be given any credit for this kind of an arrest. Mr. Singh, there were some reactions coming in from, I don't know why, the Chhattisgarh Congress, and they seem to say they seem to draw a link between Mr. Narottam Mishra, who is the Home Minister of Madhya Pradesh, and Vikas Dubey, saying that during election duty, Mr. Narottam Mishra was in charge of Kanpur, and now you have this person, Vikas Dubey, being arrested in a state where he is now Home Minister. Do you think that this is a very, very, a sort of imagination or the reality? Because it's very hard to believe this correlation, hard to prove also. Mr. Sanket, the issue is, I demand a judicial inquiry into the whole affair. A gangster of that kind has sort of flourished in Uttar Pradesh through his contacts with political leaders, with the police, with the administration, and the kind of relief that he is getting from the court. So therefore, either his case was weak or he had some connections in the judiciary also. So this calls for a judicial inquiry, because the kind of encounter which took place in Kanpur about 6 days back is unheard of in the history of Uttar Pradesh and for the country also. We could only see these kind of encounters by the criminals in movies, and now he's being sort of acclaimed as a Shiromani, but
if you will see the list of his killings, half of them are Brahmins. So, Mr. Digvijay Singh, I want to ask you, why do you insist on a judicial probe as of this moment? There will be an investigation. Why do you think that there should be a judicial probe? See, there is also a view that you may have nabbed this man who now the UP police calls a terrorist. But what about his political akas, his political bosses, who gave him that clout? Exactly. This is what I am saying, that there should be a special investigative team of the UP police, and the total investigation should be done under the judicial review of a sitting Supreme Court judge, and they should go threadbare and check on his political affiliations and his connections in the police and in the administration, so that such incidents are taken care of and they don't get repeated at any point of time later. Mr. Singh, my final question to you, a word on the UP police. Do you think that they could not even defend their own honor? 8 cops were slayed by this man, who they now call a terrorist, and then eventually this man was crisscrossing the length and breadth of North India. He goes to Faridabad, he goes to Nimach, Kota, Ujjain, and all this while the UP police was clueless. Do you think that there was an intelligence failure, or was there collusion even after this attack? Obviously, he's got friends in the system. He's got friends in the police force. And he was influential enough to crisscross from UP to Haryana, to Rajasthan, to Madhya Pradesh, and get away with it. And that too, when there is a complete checkup on the route. There are barriers on the route. How could he get out of all that? This is very surprising. So therefore, it needs to be investigated by a competent team of people with absolute, I would say, integrity, and that also should be supervised by a sitting court of the Supreme Court. Sure. Mr. Digvijay Singh, thank you so much for speaking to NDTV. All right, so here are the 4 questions which we feel, because of the political controversy and because of the questions generally being asked of the cops, these are the 4 unanswered questions even now. Question number 1, was this a surrender or an arrest? We still do not know. The Madhya Pradesh police says that this was an arrest, but then you have got reasonable doubt which is being raised by certain members who say that this was a surrender. In fact, it was stage managed. Question number 2, 6 days, and this is the most surprising, 6 days, 1500 kilometers, beg your pardon, that's a mistake, 1500 kilometers, did UP's intelligence, the intelligence system fail? Third question, did insiders in the Uttar Pradesh police continue to help Vikas Dubey even after he had slayed 8 cops, which means in this last 1 week? Was he still receiving help? And question number 4, Dubey and his aides have been caught, but what about the real patrons who have made him this Vikas Dubey that he has become now? Let me introduce our guest this evening, Sudhindra Bhadoria, leader of the BSP, Abdul Hafiz Gandhi, spokesperson of the Samajwadi Party, Sunil Bharala is a senior leader of the BJP, Geeta Bhatt is a political analyst, and Aradhana Mishra, MLA and a Congress Legislative Party leader. Thank you so much for participating in this discussion. But before I come to all of you, I have got the Home Minister of Madhya Pradesh, Mr. Narottam Mishra. Narottam Mishra जी, अभी दिग्विजय सिंह थे हमारे पैनल पे जिन्होंने ये बोला कि बड़ी संदिग्ध अवस्था में ये अरेस्ट दिखाया गया है, ये अरेस्ट है ही नहीं, ये सरेंडर है। आप कैसे जवाब देंगे? दिग्विजय सिंह जी एयर स्ट्राइक पे भी ऐसे ही बोले थे, सर्जिकल स्ट्राइक पे भी ऐसे ही बोले थे, सेना पे भी ऐसे ही बोलते हैं, तो पुलिस पे बोल दिया तो कौन सी बड़ी बात है? तो आपका ये कहना है कि एक लूज कमेंट है जो उन्होंने मारा? जी हाँ। लेकिन सवाल ये पूछे जा रहे हैं, आप पर ये भी आरोप लगाया गया कि नरोत्तम मिश्रा
कानपुर प्रभारी थे भारतीय जनता पार्टी के लिए, विकास दुबे भी कानपुर का है, तो शायद थोड़ा सा राजनीतिक संरक्षण ना दे दिया हो नरोत्तम मिश्रा ने। शायद क्यों लगा रहे हो, कोई से किसी से कंफर्म बुलवाओ ना। नहीं, मैं बता रहा हूं कौन। इंडियन नेशनल कांग्रेस छत्तीसगढ़, पता नहीं क्यों छत्तीसगढ़ कांग्रेस को इसमें रुचि है, लेकिन उन्होंने आप पर सीधा आरोप लगाया है। अरे तो भैया ये और करते क्या है, मैं वही तो कह रहा हूँ, आजकल यही काम बचा है इन पे। नरोत्तम जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता था, वो अरेस्ट आपने किया, हाँ, उसको लेकर के भी तमाम बातें हो रही हैं कि किस तरीके से अरेस्ट हुआ। एक तस्वीर आई है जिसमें सुरक्षा गार्ड और होम गार्ड और ब्लैक सूट पहने हुए लोग उसको मंदिर के अंदर लेकर के जा रहे हैं। तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये अरेस्ट था या सरेंडर। अरेस्ट था, वो स्पष्ट रूप से उसको गिरफ्तार किया गया है। बाकी जो सरेंडर कह रहे हैं वो अपने प्रमाण रखने, उनको रखना चाहिए ना, सिर्फ मुंह बातें क्यों कर रहे हैं। अगर उनके पास कोई आधार है अपनी बात का तो रखें, या किसी और के पास कोई आधार है तो वो रखें। हमने अपनी बात रख दी। नरोत्तम जी, एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जब भी किसी और राज्य में कोई अपराधी पकड़ा जाता है, सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ ट्रांजिट रिमांड। यहां पर आप लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंप दिया, आपको नहीं लगता कि कोर्ट में पेश होना चाहिए था? कानूनी रूप से जरूरत थी नहीं उसकी, जरूरत अगर लगती है तो जरूर पेश करते हैं। ये लोकल के जिला प्रशासन के उस पर डिपेंड करता है। आपकी नरोत्तम जी शुरुआती जो जांच हुई जिसमें वो पुलिस वालों ने उससे बात की होगी आज पूरे दिन, आप कुछ बताना चाहेंगे? उसने बताया कि किस तरीके से वो बचते बचाते 1500 किलोमीटर का सफर तय कर गया, जबकि कोरोना में तो बहुत भारी भरकम चेकिंग होनी चाहिए। 1500 किलोमीटर तक वो चलता चला आया। मुझे लगता है चेकिंग उसकी भी हुई होगी, पर उसके पास में जो आईडी कार्ड था वो पॉल के नाम का था, और चेहरे पर कोरोना के कारण ही मास्क रहता है, इसलिए बचा होगा। जी, Narottam Mishra, Home Minister of Madhya Pradesh, thank you so much for joining us. Let me quickly go back to our guest, Sudhin Bhadoria. You must have heard what has been said. First of all, I want to know, let's quickly come back to the state of Uttar Pradesh, Mr. Bhadoria. This is a state where a man like Vikas Dubey has survived political dispensations from the year 1991 to 2020, and all dispensations. It had BSP governments, it had SP governments, it has had BJP governments. Do you think that he could have become the Vikas Dubey he has become today without political patronage? Mr. Bhadoria. Well, you see, it is Vikas Dubey, of course, we are debating, but there is a nexus between the land mafia, the liquor mafia, the all kind of mafia, money power. There is a nexus. And of course, in this nexus, there is the administrative officers, there are police officers, all of them get together, and this is flourishing. The system is flourishing of criminals, and of course their support system is also there. What is the important question in this whole debate is that how do you check this criminalization? It is not because Dubey, one single person. You go to state after state, district after district in UP, Bihar, even in south of India, you will find everywhere such kind of people. Now, in this particular context, I will say definitely he had support from time to time from different leaders, which is open, which is there, which everybody is free of. Now, the issues that you have raised in your debate, there are many questions. I would certainly want that the government of the day should have enough political will that in future we don't have more Vikas Dubey coming up in public life. Okay, now if you speak to the government, if you speak to the present dispensation, they would say that this is exactly our will, and that is why he was absconding, this is why he was running, that's why we launched an action. No, I would say the political will is that you bring electoral reforms, you introduce certain legal. Now, how you have the list of people, how people with criminal background get elected in legislatures, parliament, and so on and so forth. They also become ministers, and they belong to all kind of political parties. My only submission in this debate is
that there is high time. Okay. Otherwise, this is eating. Okay, like you're a looking moth at long-term into the reforms. political We've been system, speaking about this, but see, and the constitution people who of are India. against these long-term reforms are also politicians. See, the reason why Vikas Dubé has existed, Mr. Sunil Bharala, No doubt about it. Mr. Bharala, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ, योर स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, डू यू थिंक दैट द यूपी अपना मान सम्मान भी नहीं रख पाए? अब ये आरोप लग रहे हैं कि इन 7 दिन के दौरान भी मुखबिरी हो रही थी, वो आपकी नजर के नीचे, आपकी सख्ती के नीचे 1500 किलोमीटर घूम गया पूरे नॉर्थ इंडिया में। संकेत जी, वो 1500 किलोमीटर घूमा या 2000 किलोमीटर घूमा, वो उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी और उत्तर प्रदेश का जो पुलिस का खौफ था, उसके कारण से वो घूमा और उसको कहीं पैर रोकने को जगह तक नहीं मिल गई पूरे उत्तर प्रदेश से, और उसको हमारी अब ये तो बड़ी अजीब बात कर जो दी आपने। शक्ति हुई है, अब पकड़ नहीं पाए तो आप कह रहे हैं कि हमारा खौफ था कि वो यूपी छोड़ के चला गया। अरे पकड़ा क्यों नहीं? अजीब बात नहीं है। कोरोना काल चल रहा है, मास्क लगे हुए हैं सबके मुंह पर, अनिवार्य है। अगर मास्क one moment, tell me something, Mr. Bharala. Mr. Bharala, you are saying mask लगा हुआ है। Now this is a law and order problem in itself, which means that anyone can wear a mask and do anything and get away. पहले संकेत जी, हमारी पुलिस और हमारी सरकार के खौफ के कारण से वो रुक नहीं पाया और उसी के चलते जो हमारी पुलिस ने जो एक कर्ष कार्य किया है और उसके चलते हुए आराधना मिश्रा, do you find this claim acceptable? और वो वहां पर the UP government is saying it is because of our efficiency, it is because of our efficiency that that terrorist Vikas Dubé fled from the state. He ran away because he found it very difficult to survive in Uttar Pradesh, and the UP police could not capture because he was wearing a mask. Aradhana Mishra. I want to inform Sunil Bharala ji, I am sure he must be aware, but when this incident took place, this fateful incident on 2nd of July in Kanpur, after that incident where 8 policemen were killed, brutally killed by this man, so after that, for 2 days, he was living in a place called Shivli, which is in Kanpur district, for 2 days. And the UP police, the Kanpur police, they had, where 40 units of police, they were trying to nab him. The STF was looking after him, and he was living right there in Kanpur for 2 days. And as you said, Sanket ji, he travelled from Kanpur to Faridabad, which is approximately 475 kilometers. On the way, definitely there must have been he must have crossed many districts, many checkpoints, many police stations, and when the state was on high alert, everybody, all the police was looking after, was on a lookout for this man. What do you have to say about this explanation that people are wearing masks? At any checkpoint. I'm coming to that. So anybody, a dreaded criminal like him, weren't they aware that if he's absconding, he must be wearing mask? This is something very simple. So if they were on a lookout, 40 teams were looking out for him, STF was looking out for him, where was the intelligence? If he was traveling on the road, they could have made certain arrangements where this man, no CCTV camera could register him. Apart from that, Bharala ji, मैं अपनी बात, बराला जी इस बात का जवाब दे दीजिए कि ये 2 दिन तक कानपुर में शिवली में कैसे रहा? ये शिवली में 2 दिन तक कानपुर में ही शिवली है जहाँ पे 2 दिन तक रहा। ये प्रारंभिक जांच, ये मैं नहीं कह रही, ये STF की। नहीं, अब देखिए आराधना जी, वो सारी चीजों का खुलासा हमारी पुलिस जब उससे एक एक बात पूछ करके और उसका प्रेस वार्ता पूरा देश देखेगा,
सारी चीजें Okay, सामने quick. आएंगी। एक Let's बात quickly सामने take in आएगी, comments of Abdul तो कोई Hafiz रोक Gandhi नहीं and पाएगा Geeta Bhatt इस also. कीमत पे। Mr. Gandhi. तो कोई रोक नहीं पाएगा। Mr. Gandhi, I'm going to जी, come to you. हमारी जहाँ ये घटना होती है, You've heard जहाँ the ये explanation from जहाँ the ये BJP. घटना होती है संकेत जी, No, वो the भारतीय problem, जनता Mr. पार्टी Gandhi, की is यूपी में that you speak सरकार to the है, BJP and they will say that हरियाणा there में was बीजेपी political की patronage सरकार है, being provided by the मध्य Samajwadi प्रदेश Party में also. भारतीय जनता पार्टी की I'm सरकार sure है। if anyone across the length and breadth of this country is watching this story today, this puts the state, which is already infamous, called Uttar Pradesh, to shame. Mr. Gandhi. संकेत जी अभी बराला जी बोल रहे थे कि योगी जी का डर है। किस तरह का डर है कि 3 साल से ज्यादा सरकार है और इनका नाम टैप जो 10 मोस्ट वांटेड होते हैं जिले में या थाने में, उसमें भी इनका नाम नहीं था। पिछले 3 साल से ये वहां रह रहे थे। घटना से एक दिन पहले उसी थाना क्षेत्र के एक जो है पुलिस वाले को उन्होंने बुलाया और उसकी बुरी तरह से पिटाई की, उसके मुंह में पिस्टल डाल दिया। ये किस तरह का डर है? ये किस तरह का डर है कि सीओ जो दिवंगत सीओ हैं, शहीद जो सीओ हैं, वो लेटर लिखते हैं और उस लेटर पे जो है एसएसपी साहब एक्ट नहीं करते That's an important point. ये किस तरह का डर है कि 2001 में राजनाथ सिंह जी की सरकार में इन्होंने संतोष शुक्ला को मारा था और 3 साल से सरकार चल रही है बीजेपी की। ये खौफ था अपने कि ही लीडर अपराधी की जो हत्या है में इन्होंने उस केस को अपने खोला नहीं, जमानत तुड़वा करके रीओपन जेलों नहीं के किया अंदर केस गए। को। ये खौफ तो योगी किस तरह सरकार का का डर है। है? ये किस आप सुन लीजिए बराला जी, आप बहुत बोल रहे हैं, आप सुन लीजिए थोड़ा सा। सवाल सुनना भी सीखिए, सिर्फ बोलना ही नहीं है। बोलते तो आप बहुत लोग हैं, लेकिन सवाल सुनना भी सीखिए। ये किस तरह का डर है कि वो इतनी बड़ी घटना कर देता है और जैसा अभी आराधना जी ने कहा कि 2 दिन तक वो उसी थाना क्षेत्र में रहता है। ये किस तरह का डर है? No, you look कि at the पिछले sort 3 of साल से statements, उसके Geeta खिलाफ Bhatt, एक भी Geeta action Bhatt, नहीं लिया गया। Geeta Bhatt, I want to come to Geeta Bhatt. Geeta Bhatt, you must have heard, Geeta Bhatt, you must have heard what Vikas Dubey said. को बताया जाएगा। Mr. Barala, one moment. Geeta Bhatt, you must have heard. Geeta Bhatt, you must have heard what he said when he was captured or arrested, right? He says, मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला, as if this is some great, a matter of great honor, as if he is some special envoy or a representative of Kanpur. Sanket ji, see, the nexus between political parties and criminals has been witnessed by the Indian democracy, and we all know we have been witness to many such incidences where political patronage has been given to criminals. And that is the reason why someone like Vikas Dubey, who was a criminal doing crime since early 1990s, had survived and thrived in the system, while one example of Santosh Shukla being, killed inside a police station in 2001 is being cited here. No one is telling that it was during the BSP government that he surrendered and was later acquitted, because none of the policemen who were actually witness to, they were so scared of him. They did not utter a word in front of him. Into this, No, I'm going to have to stop for a short break at this moment. Now I am coming to the Short point. break at this moment. I'm going to come back, Mr. Sudhin Bhadoria, since BSP has been mentioned. Please give me time. After a short Please break, give me we'll time come to speak. Geeta Bhatt, I assure you, commercials have to be taken. This is a prerequisite to a discussion on TV. Just give me a minute. We'll be back and we'll carry forward this discussion. Welcome back. Geeta Bhatt, as promised, you were saying. Yeah, Sanket ji. So what I was saying was that the policemen were so scared of him that they did not want to come forward and be a witness in that case. Now it is not just a matter of going back into the history, but we all very well know that he was a member of BSP. He also was in fact elected to some panchayat seat. His wife at present is a member of Samajwadi Party. But irrespective of that, while questions are being raised over the Uttar Pradesh police, I wish to put forth a very small point that a couple of months back, please let me complete. I waited very patiently for my turn. Now, just a couple of months back, there were NTCA for a protest where when there were rioters who were destroying public property, 288 UP policemen were injured, out of which 62 had firearm injury. But did we see any of the political parties coming out and speaking in support of or in favor of the Uttar Pradesh policemen? No, we did not see that. Why are we seeing, why? One moment, I'll tell you why this happens. Mr. Digvijay Singh We've came spoken out to and he enough was there on the experts. program. Why is it that he is not talking about Mr. Salman Khurshid, who has come out in a way and is asking, supporting that why? This is the Aradhana Mishra, one by one.
His Mr. home was Gandhi, being destroyed. Mr. Bhadoria, Jiten let's Prasad begin with has Mr. indirectly Bhadoria. come out Mr. and Bhadoria, has if you supported. listen to Geeta, you know the biggest problem over here, because she has the problem, and I want an answer from the political class, because when you garland such people, when you give them some sort of a extra constitutional position in the society, this is how you create these people. Maybe they are of political use, but then they become Frankenstein monsters. We have seen this play out over and over and over again. I mean, they're So let hailed me as put- Robin Hoods initially, but then they become a monster. Vikas So Dubey can is I one now such. answer, Mr. Sanket, if your question is complete? Mr. Bhadoria. Yes. Let me, as I had said in the beginning, and I want to put it in perspective, and I want to set the record straight. I am not using this debate for one party or the other. I can also bring in the name of Mr. Garcha, who was a Congress parliament member who threw down here in Delhi, in Curzon Road, from the top roof, person. I do not want to bring that Tandoor Kand also. And let me also talk about Mr. Vikas Dubey. In 1992, when the Babri Mosque was being demolished, he threatened and bashed up all the people who were from the minority community. And in 1991, when he shot down the minister, it was Rajnath Singh who was the Chief Minister of Uttar Pradesh and not BSP. However, I must say that there are such people in all political parties, and this system needs to be cleaned up. It is not that he belonged to BSP. He was, let me tell you, he has himself said that there was Mr. Harikishan Srivastav, who was a local leader of the Bahujan Samaj Party, who used to be a legislator, and I was his worker. Now, tomorrow, if I commit a crime, that doesn't mean my party is full of criminals or Mayawati is supporting crime. It means only that these kind of people are growing in the system because they have a link with the mine mafia. I'll tell you, there is another complicated problem. The association of caste, which has been thrown into the mix, where now there seems to be some sort of or some pocket of support for this gangster, for this terrorist, simply because of the caste he represents. Aradhna Mishra and Sunil Bharala, I'm going to come to you one by one. Ms. Mishra, would you agree that this is happening? There are certain members from various political parties, from even the Congress party, who now are trying to highlight the Brahmin pride. I mean, what is this great matter of pride in the fact that there is a person who's on a killing spree? I can put it on record, Sanketji, that Congress party has made it very clear, a criminal has no religion, no caste. A criminal is a criminal and he should be punished as per the law of the Indian Constitution. There is no doubt about it. But I want to ask you one thing. It's very sad, the kind of irresponsible statement the Bharatiya Janata Party is making. I want to ask you one thing. Tell me how this dreaded criminal who had slain 8 police cops, who was living in UP, who crossed the length of UP, who reached Faridabad, and from Faridabad he came to Ujjain Mahakal, and how dramatically today he surrendered in front of 4 unarmed private unarmed police personal guards. A dreaded criminal who 40 teams of UP police could not nab, STF could not nab, 4 unarmed people. Private police Sunil Bharala, let me. And the way it is all dramatic. So it is dramatic and raises a lot of questions. I get the point. Sunil Bharala, next and a very crucial point, and I want your answer on this. क्या आप ये ensure कर सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं? Let's have Mr. Sunil Bharala. Yeah, Mr. Bharala, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो क्या आप आश्वस्त चली गई फिर कैसे जी अभी आ रही है आवाज? हाँ, अब आ रही है। क्या आप ये आश्वस्त कर सकते हैं लोगों को कि अभी ये जो बड़ा हवा मचा है कि ये आतंकवादी है, गैंगस्टर्स हैं या जो भी क्रिमिनल्स हैं उनको एनकाउंटर, ठोको, इस किस्म के शब्द इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अगर ऐसा कर देंगे तो उसमें एक प्रॉब्लम होगी। हमको जो संरक्षण दे रहे हैं उनके बारे में नहीं पता चलेगा,
तो क्या आप यहां गारंटी दे सकते हैं कि अब विकास दुबे से एक निष्पक्ष जांच होगी और उससे यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि उसको संरक्षण कौन नेता दे रहे हैं, उसको बल कहां से मिल रहा है? एनकाउंटर कर देना तो आसान काम है, ठाए मारा खत्म। संकेत जी, उत्तर प्रदेश में जंगल राज था, उस जंगल राज को राम राज लाना हमारा संकल्प है और उसी पे हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री जवाब नहीं दिया आपने। काम कर रहे हैं। मैं आपके जवाब पे आ रहा हूँ। अभी तक हमारा पहला चरण पूरा हुआ है। इस तरह का रामराज नहीं चाहिए जहां बेटियां जिंदा जलाई जाती हो, जहां 8 पुलिसकर्मी मारे जाते हो। ऐसा रामराज उत्तर प्रदेश को नहीं चाहिए भराला जी। पर उत्तर प्रदेश के एक अपराधी का सफाया होगा। अभी विकास दुबे हमारे पकड़ में है इस समय, उसको हमारी एसटीएफ, हमारी पुलिस एक बात निकालेगी। जो संरक्षण देने वाले थे, चाहे वो पुलिस के ऑफिसर थे। मिस्टर गांधी, आपने मेरा जवाब नहीं दिया। बराला जी, मेरा जवाब नहीं दिया। गांधी, मिस्टर गांधी, I want to come to you. Do you think that it is now the responsibility of the UP government to make sure that he is brought to book? नहीं सकता और उस समझौते के करने वालों पर जिन्होंने भ्रमित किया है, उनके खिलाफ भी इतनी कड़ी कार्रवाई होगी। Do you think that now is the time? I saw Akhilesh Yadav's tweet where he said that the call data records must be out now to see who he was in touch with. Do you think that is the need of the hour? A thorough investigation of his political links. देखिए संकेत जी, हमारी मांग है कि उनका कॉल जो डाटा है वो पब्लिक किया जाए। और दूसरा ये देखिए कि सरकार का रवैया क्या है। हम ये समझते हैं कि जो जांच है वो बहुत निष्पक्ष होनी चाहिए, लेकिन अगर आप सरकार का रवैया देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो सीओ साहब का लेटर था उसको गायब करने की कोशिश की गई। उसके बाद जो विकास के भाई जो लखनऊ में कार पकड़ी गई थी एम्बेसडर, उसको बताया गया कि वो विकास ने जबरदस्ती जो है वो छीन ली थी, जबकि रूल ये है कि आपको 1 महीने के अंदर जो है रजिस्ट्रेशन दूसरे के नाम में करा देना है। तो जो सरकार का रवैया है वो बहुत ढुलमुल रवैया है, क्योंकि सरकार के बहुत सारे लोगों के फोटोग्राफ भी आ रहे हैं, सरकार का रवैया सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं जो जय वाजपेयी कर रही है। Okay, Mr. Sudhir Bhadoria, Abdul Hafiz Gandhi, Sunil Barala, as well as Geeta Bhatt and Aradhana Mishra. Thank you so much for joining us on this part of the discussion. I want our viewers, and the viewers must listen to these voices, because there is a political argument which we have got for you, and then there is the voice of those who should really matter. The voices that must be heard, relatives of the slain cops on terrorist Vikas Dube's arrest. I have with me, and I spoke a little earlier in the day with Vivek Yadav. He is the slain cop SI Mahesh Yadav's son. Vivek, पकड़ लिया गया है. We have had the capture of Vikas Dube. पर क्या ये काफी है विवेक? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। पकड़े जाने से क्या सर, ये बात तो अगर ये पकड़े जाने के बाद इनका जो पूरा नेटवर्क है वो डिस्क्लोज होता है और जो लोग इनके साथ शामिल थे सबके खिलाफ कड़ाई से अगर मुकदमा चलता है और सज़ा होती है तो ये तो अच्छी बात रहेगी। और लेकिन आखिरी में यही है, जैसे इन पे पहले भी 60 मुकदमे थे, तो पहले भी ये जमानत पे बाहर घूम रहा था, तो इसकी गारंटी कौन लेगा कि अब अगर ये जेल गया है तो दोबारा ना छूटे। इसकी हमें इसी की चिंता है कि जैसे हमारे पिताजी शहीद हो गए, इसको मौत के घाट उतारने का ये कौन गारंटी देगा। विवेक जी, ये बताइए कि कितना ज़रूरी है ये जो पॉलिटिकल नेक्सस है, जो लोग उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं, इस नेक्सस का पता लगाना कितना ज़रूरी है? देखिए सर, अगर आज इनकाउंटर हो जाता है, ये विकास दुबे मर भी जाते, तो जो सिस्टम में बैठे ऐसे गद्दार लोग हैं वो बचे रह जाते, जिससे कल को फिर दूसरे विकास दुबे पैदा हो जाते। तो इसलिए जो सिस्टम में बैठे गद्दार हैं उनको पकड़ना बहुत जरूरी है। आप बताएंगे हमको ये सिस्टम में बैठे गद्दार, these traitors in the system, do you think it's important to identify them and that should be the priority of the government? विकास दुबे के पकड़ लेने से थोड़ी कुछ होगा, कल को फिर कोई दूसरा आदमी आएगा वो भी ऐसा काम करेगा। इसलिए जो सरकारी तंत्र में जो नेता और जो पुलिस वालों, जो भ्रष्ट पुलिस वालों का जो ये गठजोड़ है, जो ऐसे आदमियों को संरक्षण देता है, जिसकी वजह से जो ईमानदार पुलिस वाले हैं उनकी जान चली जाती है, वो शहादत प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए, उनका नाम मीडिया में उजागर करना चाहिए, ताकि ऐसे लोगों को आगे नेता ना बन सके और इनके खिलाफ आतंकवादी की तरह मुकदमा चलाना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, और ये शब्द यूपी पुलिस ने भी इस्तेमाल किया था, आतंकवाद।
मैं आपसे ये जानना चाहता हूं विवेक, उन पुलिस वालों को आपको क्या कहना है या उनके बारे में क्या कहना है जिन्होंने मुखबिरी की, दोज हु कोल्यूडेड विद विकास दुबे? सर अब उनके बारे में यही कहना चाहूँगा कि सर जब एक पुलिस वाला सर कहीं दबिश देने जाता है तो उसे सबसे ज़्यादा भरोसा दूसरे ही पुलिस वाले पे होता है, और अगर वही दूसरा ही पुलिस वाला गद्दारी कर जाए तो सर इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। सर हम तो रहते नहीं अपने पिताजी के साथ, तो इसलिए जब वो पुलिस विभाग में रहते हैं उनका परिवार पुलिस ही विभाग है, और जब पुलिस विभाग के लोगों ने उनके साथ गद्दारी कर दी तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। You think these cops who had utter disregard for their own force, ये जो पुलिस वाले थे जिन्होंने आपके पिताजी का साथ नहीं दिया, उनको धारा 302 में उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? सर लाइन हाजिर से क्या होगा? सर लाइन हाजिर से क्या सर, कल वो फिर ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे। लाइन हाजिर करने का कोई मतलब ही नहीं है सर। उनके खिलाफ भी 302 का मुकदमा चलना चाहिए सर, हत्या का मुकदमा चलना चाहिए, बर्खास्त होने चाहिए वो लोग, उन्हें सेवानिवृत्त कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए नौकरी से। विवेक, मेरा और जैसे कि राजद्रोह या फिर ऐसे देशद्रोह का मुकदमा भी चलना चाहिए उनके ऊपर। जी विवेक, मेरा आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री से आप कुछ कहना चाहेंगे अगर आज वो देख रहे हो, सुन रहे हो? द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी। मेरी योगी जी से यही अपील रहेगी कि जो इनका जो नेटवर्क था, जो अफसर और राजनेता जो आपस में मिल के ऐसे लोगों को संरक्षण देते थे, ऐसा पूरा नेटवर्क ध्वस्त किया जाए और दोबारा ऐसे कोई पुलिस वाले के साथ ऐसी घटना ना हो, ना कोई भी पुलिस वाला ऐसे वीरगति को प्राप्त हो। इसलिए ऐसे नेटवर्क को पूरा मॉनिटर किया जाए, कहाँ पे कौन था इन्वॉल्व, किसकी गाड़ी से विकास दुबे उज्जैन पहुंचा, इन सबको पकड़ के पूरी तरीके से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इनके ऊपर। ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि आगे मिसाल बन जाए, दोबारा ऐसा कोई काम ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। Hearts go out for you and your family. Thank you so much for speaking to NDTV. I also spoke to the wife of Mahesh Yadav, Sub-Inspector Mahesh Yadav, Suman Devi. Suman Devi, this gangster, ये आतंकवादी, ये कानपुर से फरीदाबाद से उज्जैन पहुंच गया। आपको लगता है बिना राजनीतिक संरक्षण के ये नहीं हो सकता था? Without political patronage, could he have done this? सर वो पुलिस अफसरों से मिला हुआ था और पुलिस भी हमारे ही डिपार्टमेंट के उससे मिले हुए थे, और मेरे पति निर्दोष थे और मेरे पति को कुछ पता नहीं था, और वो चौबेपुर का जो यशो था वो मिला था। सर जानते हो पुलिस ने ही मेरे पति को मरवाया, नहीं मेरे पति हमेशा दबिश में जाते थे। मैं 3 महीने से वहीं रह रही हूँ, शिवराजपुर थाने में, वही आवास ही में रह रही थी। और मेरे पति पहली बार नहीं गए थे, लेकिन ये सब अपने ही डिपार्टमेंट के मिले थे। सर सुमन देवी जी, आपका ये कहना है कि पुलिस आप मानती हैं, पुलिस को ही जिम्मेदार मानती हैं अपने पति की हत्या के लिए? जी सब मिले हुए थे सर, नहीं मेरे पति को ये ना होता। और सर वो लोग सब प्लानिंग से थे और मेरे पति जो है कुछ समझ नहीं पाए और चले गए, और वहाँ अंधाधुंध गोलियां चल गई। अगर मेरे पति का एक पैर ही कट गया होता तो मैं आज जिंदा देखती और मेरे बच्चे अनाथ नहीं होते। सर आप किस किस्म की जांच चाहती हैं? व्हाट सॉर्ट ऑफ अ प्रोब डू यू थिंक शुड बी देयर इन दिस केस? सीबीआई? मुझे न्याय चाहिए सर, इसके लिए सीबीआई जांच हो सर। मैं विधवा होकर जिंदगी जी रही हूँ, मेरा 1-2 साल का बेटा है सर, मैं कैसे जीऊँ आप बताइए। सुमन जी, आपको लगता है ये जो पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं इनको एक्सपोज होना भी बहुत जरूरी है? आज ये एक विकास दुबे है, ये राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा तो और आगे भी होते रहेंगे। जी बिल्कुल होना चाहिए सर, इनका भी पर्दाफाश होना चाहिए, कहाँ क्या हो रहा था। इसलिए सीबीआई जांच की मैं मांग इसलिए कर रही हूँ कि कम से कम दूध का दूध, पानी का पानी तो सही हो जाए। जी thank you so much. Now we'll be speaking to Miss Urmila. Mrs. Urmila is the wife of slain cop Sultan Shrivas. उर्मिला जी, सबसे पहले तो ये बहुत कठिन समय होगा आपके लिए. It must be a very, very difficult time. But when this news came of Vikas Dube's arrest, does this offer some solace, some peace, some satisfaction? संतोष की क्या सर, खुशी तो हुई है पर इतनी नहीं। उसके पकड़े जाने से हमारे पति थोड़ी लौट आएंगे।
और ये है कि इसके आगे और अपराध तो नहीं होंगे, इसलिए थोड़ी खुशी भी है। मैं आपसे भी वही सवाल पूछना चाहूंगा उर्मिला जी, आपको लगता है कि बिना राजनीतिक संरक्षण के, विदाउट पॉलिटिकल कोल्यूजन और द कोल्यूजन ऑफ कॉप्स, दिस सच अ ड्रेडेड गैंगस्टर कुड ऑपरेट? और अगर ये कोल्यूजन ना होता, साठगांठ ना होती, तो आज आपके पति जिंदा होते? जी सर, बिल्कुल होते। अगर कुछ पुलिस वाले नहीं मिले होते तो आज मेरे पति जिंदा होते। वही कहावत है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। सभी लोग डिपार्टमेंट में ऐसे नहीं है, पर कुछ तो है ही, जब तो खबर लीक हुई है। Thank you. Let's hope that the administration is listening to you. That's why we are getting these voices. These are important voices that the UP government must hear when it begins a probe against Vikas Dubey. We also spoke to Har Prasad, the slain cop, Sultan Srivasa's father. Har Prasad जी, आपको लगता है कि 8 पुलिस वालों का मर्डर करने के बाद भी विकास दुबे को संरक्षण मिलता रहा, पॉलिटिकल पेट्रोनेज मिलती रही? वो तो दमंग से बोल रहा है, हर बात में दमंगी से कह रहा है कि मेरे क्या करेगा कोई। बताओ, आपको लगता है आपको इंसाफ मिलेगा? जो सर सरकारें जाने, सरकार तो मिली भगत है। सरकार जो चाहे वो कर सकती है, चाहे तो अभी हाल काउंटर दिखा सकती है, तो अभी हाल फांसी भी लगा सकती है। All right, so these were the 4 voices of family members of the slain cops. On a day when Vikas Dubey has been arrested, you've seen political arguments that have been mounted. But let's hope that the administration, the UP government and the political class reflect these voices the next time they speak, the next time they produce their voice.